अस्सलाम वालेकुम मोमिन। आज हम लोग करने वाले हैं मेम रिव्यू इस्लामिक वर्जन। लेकिन हाँ, इस्लामिक वर्जन मेम रिव्यू। लेट्स सी, अगर आज तक आपने इससे पहले कभी इस्लामिक मेम नहीं देखे होंगे, जिसको नहीं पता पहली बात मेम क्या होता है, एक फोटो होता है उसमें एक जोक बन लिखा रहता है। आप देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। लेट्स सी। Meme number 1, go. डिड यू से बिस्मिल्लाह? Okay, I've been there. हाँ, ठीक। Moving on. लेकिन ये जब ऐसा होता है तो बिस्मिल्लाह ऐसी चीज है कि अगर भूल गए तो बार बार उसमें जब जबरदस्ती करना पड़ता है ना, चलो। मुझे तो नॉर्मल है, मैं जब भी बोल जाता हूँ तुरंत कर देता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि इट्स अ बिग डील। बिस्मिल्लाह ही तो है। Okay, my turn. When you're about to eat iftar and your siblings who are not fasting on the day, yeah, that is a problem. That is a problem. I mean, कह नहीं सकते कुछ, लेकिन अंदर सबको मालूम है भाई। maturity. भाई मैं इतनी मेहनत करके इफ्तार कर रहा हूँ, वो मुझसे ज्यादा खा रहा है, जो कि रोजा भी बंदे का चेहरा इमोशन परफेक्ट है यार। According to brown parents, the only solution to your problem is चप्पल। I mean, to be frank, हमें चप्पल कभी पड़ी नहीं है, बट हाँ ये बहुत रिलेटेबल मीम होगा बहुत सारे लोगों के लिए। देखो, चप्पल, कंघी, हैंगर and all the other things that your mom can find in your house. Basically closest thing जो भी होगा, that's it. Closest things to her. कुछ भी हो। पढ़ना चाहिए बस। और निशाना भाई हो। You are not just a tiny part of my life, you are my whole धनिया। मैंने इसको दुनिया पढ़ा। धनिया, okay. whole धनिया क्या होती है वैसे? Anyways. Finally made mango shake. Mango shake, yeah. Looking dope, shake sir. Looking dope. Mango shake. Shake. Brown dads watching photos of the cows they bought back for Qurbani back home. बंदा सऊदी में आराम से कमा रहा है, घर में cows, लेकिन cows इंडिया में कहना नहीं। You can say goat. हाँ, मतलब कन्वर्ट कर लो। इंडिया में नहीं होता भैया, लेकिन हाँ यूपी में नहीं होता। गोवा अगर Shia people's life before Muharram, during Muharram, you can say. Exactly. I have so many friends like this. Don't do Just that. example is me. But I have really so many friends like that. We have a successor to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then Imam Ali. Okay, basically the same thing. Corporate needs you to find the difference between these pictures, between this picture and that picture. They're the same picture. Yeah, she's right. Correct. She's absolutely right. Yeah, same picture. पर्दा करके तो और बेहतर लगता, but हाँ, she's right. My new friend, are you a Shia kafir? Well, Shia kuffar. Well, yes, but actually no. Shia है मतलब कुफार वाला पढ़ा। तुम्हारे लिए, तुम अगर काफिर मांगते तो yes, because you are already confusing time है आजकल। मतलब कोई भी मतलब कुछ भी ओपिनियन दे रहा है, हम इसको डिबेट करते हुए चल रहे हैं, अपना को डिफेंड करते हुए चल रहे हैं। हाँ, तुम्हें मानना है मानो, तुम्हारे मानने से थोड़ी ना। Well, yes, but actually no. Exactly, correct. Teacher, Islam is the religion of peace, backbenchers. Exactly true. अगर आप backbenchers को एक ऐसे स्टूडेंट मानते हैं कि जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, तो ये वही ऐसे मुसलमान जो इस्लाम पे ध्यान नहीं देते। Exactly. Turned out to be like this. Okay. Yes. मतलब इस्लाम में जो पढ़ाया गया इसके सर के ऊपर से गया, बैकबेंचर था और गलती इसने की। This is not a Muslim. इसके सर से ऊपर गया, इसके सर के ऊपर से गया, इसलिए बाल भी लेके चला गया। Okay. So the next part के लिए अभी ये मीम रिव्यू एकदम लाइक टोटल कच्चा कॉन्सेप्ट है हमारा अंसार मोमिन की तरफ से। तो हम फिलहाल फर्स्ट जो है टेक्स्ट बेस्ड मीम रिव्यूज किए हैं, उसके बाद जो है हम शिफ्ट कर रहे हैं द बिगेस्ट एंड द मोस्ट हिलेरियस वेबसाइट देयर इज टिकटॉक। लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड, जो इंडिया में बैन है, इसलिए हम YouTube पे देखेंगे। YouTube पे TikTok देखते हैं। वाह। सुन्नी वर्सेस शिया मुस्लिम ऑन टिकटॉक। ओके, सुन्नी नमाज पढ़ रहा है, शिया नमाज, ठीक है। Can we unite and be one? Thanks. Who says we are not united? I mean, अगर एक बंदा हमारे बगल में बैठ के पढ़ रहा है दूसरे वे से और तुम उसके दूसरे वे से पढ़ रहे हो और तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, it means you are united, man. I mean, if you are unite, yeah. If you are a true Shia and if you are a true Sunni, we are united. Otherwise, अगर आप प्रोपेगेंडा के पीछे भाग रहे हो तो वो अलग। यूनाइटेड का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि जो खाना आप खा रहे हो वही मैं भी खाऊं, जैसे तुम चल रहे हो वैसे मैं भी चलूं। नहीं, यूनाइटेड ये कि having the differences but accepting all those differences and living together. I don't know who needs to hear this, but if a Sunni and a Shi'i were in China debating, arguing and fighting about what proper Islam is, and the Shi'i was praying according to the Shi'i way of prayer in public, and the Sunni was praying according to the Sunni way of prayer in public, both of you would be picked up and tortured by those Chinese officials in detention camps. तो I think he was trying to say कि कोई मतलब नहीं है, तुम लड़ाई करते रहोगे, दोनों मार खाओगे।
Basically नहीं the same मतलब thing कि ऐसा India, होता है, ऐसा नहीं होता hopefully. क्या, मतलब चाइना में मुस्लिम लोग नहीं है क्या? आई डोंट थिंक, ही इज जस्ट ब्लफिंग. Maybe. By the Muslim living in my body, when someone says Shias are kafirs. So मतलब wait. So she's saying कि हम मुझे काफिर बोला गया, so Muslim party is living out of my body. Is that it? I'm not getting this. Is this too? अच्छा ये advanced? शिया है, ये कुछ हाँ, ये कुछ शिया है. Someone's telling that कि she's काफिर. So the तो Muslim. फिर मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया, तो ये why is she happy? I think she's happy because it's on TikTok. कुछ भी चल. When you have to pray on a tissue in Saudi Arabia because they aren't fine. They can't find that you are Shia. Oh, Is that a thing? yeah. Actually, you can pray on a paper or a tissue if you don't have any sajdaga. No, like, the second part. They can't find out you're Shia. Some people do that, I guess, maybe. Like actually, she's singing songs, bro. Let's just copyright ना. YouTube पे है ना, then copyright नहीं आएगा. हाँ, म्यूट कर देंगे इसको. इसमें हम लोग शायद इसके सॉन्ग्स म्यूट कर दें तो आप लोग को थोड़ा वो लगेगा. दूसरा अगर सॉन्ग जो अटैच नहीं हो रहा होगा तो दूसरा हमने लगा हो सकता है. When a bunch of people in my class start talking about Sunnis, And ये what was that? क्या मुस्लिम हुआ? आउटसाइड मुहर्रम. हाँ, ये कह सकते हैं शिया मुस्लिम आउटसाइड. हाँ, ये है. Relatable. Sad but relatable. ये एक्चुअली रमजान से भी रिलेटेबल है. ये खाली शियों से कनेक्टेड है और वो ऑल मुस्लिम से. Being a Shia Muslim. They must be trying to kick me out of the religion. Yeah, we just want to live in peace, man. Let us live in peace. Jesus. What kind of Shia or Muslim that you are just accepting? Maybe he doesn't want to argue. Being Shia is fun all until you have to wait 15 minutes extra to eat during. That was nice. That was nice, but you have to be sure, right? That your fast is going to be accepted. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. The world wants us to focus on the things that tear us apart. What? Don't you think it's time that we focus on the things that we have in common? And please, That's what I said. don't assume either group for us. अच्छा, ये एक दूसरे का ड्रेस पहने थे और हम लोग को लग रहा था कि वो शिया और ये सुन्नी हो. Oh. When your mom is Shia and your dad is Sunni and Your mom is playing something. Yeah. your mom playing Koraila and your dad not, I think it's a Sunni thing. maybe. अच्छा, he's referring to Noha. And I'm trying to show my mom I care because she's in the back all emotional. Yeah. Not relatable. I've never seen. Not relatable, but वो लोग के साथ होता हो. अच्छा, अब बच्चे को मारेगा, बीवी को तो मारेगा. Similarities between Sunni and Shia Muslims. Number 3, we read Al-Quran. Number 2, we obey Prophet Muhammad. And number 1, we believe in the one true God, So? Allah. When Sunnis always hate on Shias, but at least we get to celebrate more Eids than them. Yes. Good one, actually. We have, I think, 2-3 times more Eids. Yeah. I swear to God, bro. Being What a are you Shia saying? Muslim is a double disability. Let me tell you why it's called a double disability, in my opinion, right? First of all, you get hate from non-Muslims for being Muslim in the first place. Second of all, you get hate from your own Muslims for being a Shia Muslim. Like, something called background. We're back here defending, boys. We're back here defending. Full time job, man. Full time job. Sometimes you just have to ignore it, man. Muslims trying to explain the difference between Sunni Muslim and Shia Muslim. Ding 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 ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding 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 diggy ding 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 diggy ding ding. That little bitty change. It's not the same. यार अच्छा था. They're making progress, huh? When your Sunni mom says to eat at 9:30 and your Shia mom Shia dad says okay. Nine. इतना भी डिफरेंस नहीं है, खाली 10 मिनट का डिफरेंस है. अगर अब इफ्तार की बात कर चल रही है तो खाली 10 मिनट का डिफरेंस है, बस आधे घंटे का डिफरेंस. What? Was that Husainiya or something? When you enter a new masjid, But it's actually a Husainiya. but it's a different kind of masjid. Maybe he's referring to Imam Barga. What's with the rock? There's no rock. Rock, maybe he's referring to Sajdaga. Yeah, Sajdaga is at Sajdaga. Oh. Yeah, but it's a different kind of masjid because he's referring to Shia masjid
and Not that different. but I don't think there is a difference. Both are masjid. I can still come and pray. No problem, sir. Reason why Shias are better Muslims? You are not, because you are not in hijab. Whatever you are. Number one point. Maybe because even if you are Sunni or Shia, I don't care. There is no reason where you are all. ठीक चलो. But you are not a good Muslim. If you're Sunni or Shia, I want you to watch this video. So if you ask me if I'm Sunni or Shia, I'm going to tell you that I'm Sunni, and I'm proud to be Sunni. I'm also going to tell you that I love my Shia brothers and sisters as well. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. The believers are but brother. There is no point in ignoring the elephant in the room by saying that, oh, you know what, let's ignore all these terms and let's just call ourselves Muslim. This is not the solution, because since the very beginning days of Islam, it has been accepted that there can be a difference of opinion on multiple matters. The Sunnis have their opinions on certain matters, and the Shias have their certain opinions on certain matters. And there are so many things that we all agree on. We believe in the Quran, we believe in the Prophet ﷺ, we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Sunni Muslims have to love the Ahl al-Bayt, and Shia Muslims have to respect the Sahabas. If we can tolerate one another and accept one another and have mature conversations about our differences, that is how we unite with one another. ये तो बहुत ऊपर पर से निकल गया मतलब. एक चीज ये Sunnis have to respect the Ahlul Bayt, not Sunnis, Muslims, bro. Yeah. And Shias have to respect the Sahaba, not Shias, Muslims, bro. And yeah, the difference is that you have to figure out which people come under Ahlul Bayt and which people come under Sahaba. Hello, so that's it, guys. आज के लिए इतना ही. आज अगर ये वीडियो पे 50 लाइक आ जाते हैं, हाँ, तो हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे. 50 लाइक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्योंकि एकदम ही हम लोग को लग नहीं रहा है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी. फिर भी इट्स अ ट्राई. जिस बंदे को परफेक्ट लगी ये वीडियो देखना है, उसको 50 लाइक करवाना पड़ेगा. साफ बात. वर्जन 2 के लिए यही रिक्वायरमेंट है. 50 लाइक, क्योंकि हम लोग के चैनल के लिए इट्स अ बिग डील. सो क्योंकि और हाँ, आपके पास बढ़िया मीम्स हैं, आप उसको देखते हो, मजा आता है, हमें शेयर करो, हम उस पर रिव्यू बनाएंगे. बढ़ गया. नंबर 1 थिंग 50 लाइक्स. So see you in the next video. खुदा हाफिज़ मोमिनीन.